this, if nobody else in the future has to go through something like this, and there is an end to terrorism, then I really hope it provides me some relief. See, मैं यही बोलना चाहूँगी, मेरे husband ने, he had joined the Indian Defence Forces because he wanted to make sure that there is peace and end of terror in this country. Of course, he is not here physically, but through this operation, his spirit stays. And I mean, I hope and I really hope and pray to God that his soul is at peace and is satisfied to see that people who have done wrong, और जिन लोगों ने मासूम लोगों की जान ली, मासूम लोगों के परिवार खराब करे, क्योंकि एक इंसान के साथ वो इंसान नहीं, बहुत जाने जाती हैं, तो उन लोगों को आज सख्त से सख्त सज़ा मिली गई. और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये सिर्फ यहीं पर ख़त्म ना हो, टेररिज्म पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ताकि कभी भी जिस दौर से मैं गुज़र रही हूँ, किसी दौर से किसी भी और इंसान को ना गुज़रना पड़े. बस मैं यही कहना चाहती हूँ. आई थिंक द नेम इज़ वेरी करेक्ट बिकॉज ऑब्वियसली, आई मीन एटलीस्ट मैं तो इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज मेरी तो अभी शादी हुई थी लिटरली. एंड जब आपकी शादी होती है, आप बहुत चीज़ें, और मेरा तो लिटरली मेरी लाइफ ले ली गई मेरे से, लिटरली मेरी लाइफ मेरे से ले ली गई. एक सेकंड में मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई. तो और सिर्फ जो मैंने सहा है वो सिर्फ मैंने नहीं, बहुत लोगों ने सहा है. जितने भी लोग वहाँ पर मरे, उनकी बीवी, उनकी बहनों, उन सब ने बहुत कुछ सहा है. तो ये ऑपरेशन signifies that in the future nothing like this can or should happen again, where women have to go through something like this, or even men, relatives, father, mother, sister, किसी को भी इतने दर्द से नहीं गुजरना चाहिए. It is a very good initiative by the Indian Defence Forces, and of course लड़की और लड़कों दोनों को हर जगह मौका देना चाहिए. और एक लड़की शायद एक लड़की का दर्द सबसे ज़्यादा समझ सकती है. सो ऑब्वियसली सब दर्द सबका अलग है, आप दर्द को कंपेयर नहीं कर सकते. बट what I've been through or what other women have been through, I think it's only a female who can understand that, and they can show the rage on the other party. So I think it is a very, very good initiative, and I really hope that in the future more and more female defense forces are engaged in these operations. Honestly, what I have been through or the pain that I am in right now, nothing can bring peace to that. But obviously it provides me some kind of relief that at least, you know, through this, if nobody else in the future has to go through something like this, and there is an end to terrorism, then I really hope it provides me some relief. See, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती. मुझे पता है कि मेरी इंटेंशन क्या थी, और मेरी इंटेंशन बस ये थी कि कोई भी मासूम इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी हेट्रेड. बट येस, जो लोग हेट्रेड फैलाते हैं, दे डू नॉट हैव द राइट टू लिव, एंड दे डू नॉट हैव द राइट टू बी ऑन दिस अर्थ. एंड आई रिक्वेस्ट, and I'm really thankful to the government that this is the start, and I really hope that this is the start of end of terrorism in our country, and I hope in the world as well. Of course, as I said, this should be the start of the end of terrorism in our country. Nobody should have to go through what I am going through, or other people, the family members of the 26 people who have passed away in that incident are going through. It's traumatic. It's literally traumatic, and so obviously ये दोबारा कभी भी किसी के साथ ऊपर वाला करे किसी के साथ ना हो. And I pray and I request the government that this they should not stop here. They should make sure that every person who wants to attack peace, who wants to create terror, who wants to spread hatred should be erased. Of course, absolutely. I mean, क्या बोलते हैं, if सबसे पहली बात, they were cowards, because वो तो people who did not have weapons, they came और वो उनको मार रहे थे. Had my husband been equipped with some weapons, because he was trained also, they would not have been alive, right? And
द वेरी फैक्ट, मैंने सबसे पहले यही बोला, द वेरी फैक्ट दैट ही जॉइंड द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, उसी दिन उसने सोच लिया था दैट ही हैड टू प्रोटेक्ट दिस कंट्री, एंड he is right. It is because of him that these airstrikes have happened, and it is because of this that terrorists are being erased. So of course he deserves the highest honor in this country. So when my husband was shot, immediately I had protested. Immediately I told them that what is this that you've done, but they were incensed. They are not humans, right? They are not humans. What I was told was that our parents were also killed in front of our eyes the way we are killing your husband, right? And मैंने उनको यही बोला था कि हमने तो आपके साथ कुछ नहीं किया ना, बट देन ऑफ कोर्स दे हैव अ लॉट ऑफ हेट्रेड, और आप इंसान को, जिस इंसान के अंदर आत्मा ही नहीं है, वो इंसान किसी की भावना कैसे समझेगा?